Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of presentation is presentation on e-waste. E-waste means के electronic waste. And this is a e-waste contents. आज के दिन में हम क्या डिस्कस करेंगे? What is e-waste? Electronic waste क्या है? Sources of electronic waste in Pakistan. मीन्स के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पाकिस्तान में कहाँ से आ रही है? टाइप्स ऑफ ई वेस्ट, मतलब कौन से टाइप्स होते हैं ई वेस्ट के? इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन. इफेक्ट मीन्स के उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उन जो छा इम्पैक्ट पवंदो आहे छा ते? एनवायरनमेंट ते ऐं ह्यूमन ते, मीन्स के माहौल ते ऐं इंसान ज़ात ते. 5 लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ई वेस्ट इन पाकिस्तान. मीन्स कि उन जो माना लीगल माना ईअं सम्झी वञे त कानून जे मुताबिक़ उन जो कहिड़ो तरीक़ो आहे पाकिस्तान में. Disposable of e-waste. That how we can dispose the e-waste. Okay, now we will discuss what is e-waste. E-waste is a popular informal name for electronic products nearing the end of their useful life. इनके पाण ईअं डिस्कस करे सघूं था त इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उनखे चवंदा आहियूं जेका पंहिंजो ड्यू टाइम ॾे. ठीकु आहे, उन खां पोइ उहा शइ वधीक उन में कैपेसिटी न हुजे त उहा शइ वधीक तव्हां यूटिलाइज़ करे सघो. या डिस्क वग़ैरह थींदियूं आहिनि, टीवीज़ वग़ैरह थींदियूं आहिनि, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वग़ैरह थींदियूं आहिनि. ठीकु आहे, यूएसबीज़ वग़ैरह थींदियूं आहिनि, मेमोरी कार्ड्स थींदा आहिनि. इहे छा में था अचनि? इहे असांजा इलेक्ट्रॉनिक में था अचनि. पर जॾहिं इहा शइ ज़ाया थी वई, उन्हनि जो कोई कमु न बचियो, हाणे उनखे छा चवंदासीं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट चवंदासीं. कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, VCRs, स्टोरियोज, कॉपर्स एंड फैक्स मशीन्स. फैक्स मशीन माने जेका पुराने टाइम में यूज़ कंदा हुआसीं, जेका फैक्स हूंदी. ठीकु आहे, बिल्कुल. The fax machines are common electronic products. Many of these products can be reused, refurbished and recycled. Reused माना पुट अहिड़ी तरह जो उन्हनि खे असां रीयूज़ करे सघूं था बार बार हर हर. ठीकु आहे. Refurbished means के उन्हनि में थोड़ी घणी तव्हां चेंजिस करे, ठीकु आहे, उन्हनि खे वरी तव्हां यूज़ करे सघो था. उन खां पोइ रिसाइकिल मीन्स के उन जो हिकिड़ो प्रोसेस थींदो आहे, उन खां पोइ रिसाइकिल करे तव्हां उनखे फर्दर यूज़ करे सघो था. अच्छा, माशाल्लाह. ठीक है. Now we will discuss sources of e-waste in Pakistan. मीन्स के पाकिस्तान में e-waste या sources कहिड़ा आहिनि? ठीक है. Number 1, although Pakistan is a signatory of the Basel Convention, the country is one of the largest receivers of e-waste. Pakistan has emerged as a major dump yard for the large volume of e-waste coming from the United States, EU means के European Union, Japan, United Kingdom, Australia and Gulf countries. हिन जो मक़सद इहो आहे त पाकिस्तान जेको आहे हिकिड़ो तमामु घणो वेस्ट रिसीव थो करे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसीव थो करे. काथऊं? कहिड़नि मुल्कनि मां? US जंहिंखे चवंदा आहियूं यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड गल्फ कंट्रीज. गल्फ कंट्रीज मीन्स के UAE, तव्हांजो बहरेन थी वियो, कतर थी वियो, सऊदी अरेबिया थी वियो. इहे छा में था अचनि? इहे तव्हांजा गल्फ कंट्रीज में था अचनि. E-waste gets the entry in the form of donations by the charities and second-hand used items for the resale and reuse purposes. ठीकु आहे. हिन जो मक़सद छा आहे त इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जेको असां ॾे अचे थो इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन थो अचे. तव्हां ॾिसंदा हो त पंहिंजो हेॾे जेकॾहिं KPK यार्ड ॾे वेंदा आहियूं त हुते तमामु घणा पंहिंजो कंटेनर्स हूंदा आहिनि, त उन्हनि में मुख़्तलिफ़ शयूं ईंदियूं आहिनि. The import of computers from foreign countries is UEEE has found to be the following as under US, UK, Canada, UAE, Singapore, Australia, European Union, China and Korea. हिननि कंट्रीज में जेको आहे असां वटि जेको आहे ई वेस्ट अचे इन दी फॉर्म ऑफ डोनेशंस और चैरिटी. त पाकिस्तान खे असां सपोर्ट था कयूं इन केस में. ठीकु आहे. उन खां पोइ ॾिसो हाणे छा थो चए, द क्वांटिटी ऑफ ई वेस्ट जनरेट इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में ई वेस्ट केतिरो जनरेट थो थिए? PCs एवरेज इंपोर्टेड यूनिट million 1.42, लैपटॉप, मॉनिटर्स, TVs, printers. ठीक है. कराची, how much Karachi is received e-waste?
The average quantities of the major items imported to the Pakistan mainly in the name of UEEE. Karachi 85,291 tons. ठीक है. Types of e-waste in Pakistan. Pakistan में कहिड़नि क़िस्मनि जो e-waste ठहे थो. Number 1 laptop and desktops. Number 2 centralized processor. Number 3 calculators. Number 4 fax and photocopy. Number 5 telephones and cell phones. ये centralized processor जेको तव्हांजो मदरबोर्ड में यूज़ थींदो आहे उनखे चइबो आहे centralized processor. या मुख़्तलिफ़ तव्हां डोमेन्स में यूज़ कंदा हो प्रोसेसर हिकिड़ो कमु कंदो आहे. जीअं ॾिसंदा हो पंहिंजे मोबाइल में हूंदी आहे प्रोसेसर हूंदो आहे, रैम अलॻि हूंदी आहे, प्रोसेसर अलॻि हूंदो आहे. जेतिरो प्रोसेसर ऐं रैम तव्हांजी वधीक सुठी हूंदी ओतिरी उहा शइ जेका आहे फास्ट कमु कंदी आहे. उन खां पोइ hazardous materials in e-waste. पुट hazardous माना उहा शइ जेका तव्हांखे नुक़सान पहुचाए. E-waste does not pose any environmental and health impacts unless it is dismantled and recycled. Means के e-waste छा कंदो आहे तव्हांजो नुक़सानकार एॾो घणो कोन्हे जेको माहौल ते ऐं इंसान ज़ात ते असर विझे. Unless it is dismantled and recycled. Major reason of these impacts is the improper ways and means to dismantle and recover the material from e-waste, due to which hazardous material present in these electrical and electronic equipment are released into the environment, and the workers involved in dismantling and recycling are exposed to these hazardous materials are as follows. माना पुट ॾिसो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तमामु घणो नुक़सानकार कोन्हे, पर उन मां जेका शइ तव्हां कढो था, जेका शइ तव्हां रिसाइकल था कयो, उहा तव्हां कहिड़े तरीक़े सां था कयो उन जो असांखे ख़्यालु करिणो आहे. लाइक लीड आहे, एल्यूमिनियम आहे, आयरन आहे, कॉपर आहे, बेरियम आहे, निकिल आहे, ज़िंक आहे, गोल्ड आहे, इंडियम आहे, रोडियम आहे, सेलेनियम आहे, सिल्वर आहे, कोबाल्ट आहे. ठीक है. Okay. Now we will discuss effect of e-waste on environment. त माना इफेक्ट माना उन जो असर कहिड़ो थो पए माहौल ते e-waste जो. Number 1, different hazardous materials are mentioned above are released during e-waste recycling. Mostly these materials are hazardous chemicals and heavy metals which are released into the environment and pose health risk. इनन में कुछ materials हूंदा आहिनि जिन जो तव्हां जेकॾहिं ख़्यालु न कंदा हो, कुछ chemicals हूंदा आहिनि त छा कंदा आहिनि उहे डायरेक्टली असांजा कॉन्टेक्ट में अची वेंदा आहिनि माहौल सां, जंहिंजे करे माहौल जी आलूदगी ऐं hazardous प्रोड्यूस थींदो आहे ख़्यालु न करण जे करे. Hazardous materials are released when e-waste is dismantled. ठीकु आहे. जॾहिं बि e-waste खे dismantled कयो वेंदो आहे त उन जा hazardous materials जेके रिलीज थींदा आहिनि. Plastic parts are burned, metals are recovered through chemical processes, and discarded parts are disposable of on land and water under unsafe manner. इन जो चवण जो मकसद इहो आहे त जेकॾहिं जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज करते हो या डिसमेंटल करते हो तो उससे रिलेटेड और भी चीज़ें होती हैं जो उससे मुंसलिक होती हैं. तो हमें क्या काम करना है कि जो उनका मटेरियल है उनको सेफ तरह उनको डिसमेंटल करना है, और जो जो जिस टाइप का है उसको उस प्रॉपर जगह पे सेफ करके रखना है. Health of the workers involved in the e-waste recycling operations in communities living in the vicinity of e-waste recycling operations. मीन्स के जो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं उस ई वेस्ट में उनका हमें बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि वो किस तरह काम कर रहे हैं ई वेस्ट रिकवर करने में या ई वेस्ट को डिसमेंटल करने में. वो इस तरह करें ताकि उनकी हेल्थ जो हो वो मुतासर ना हो. Now we will discuss effect of e-waste on human body. Workers involved with the breaking of the computers are at the risk of inhalation of dust that may contain lead, barium oxide, and phosphorus. इंसान ज़ाती उन जो कहिड़ो असर पवंदो आहे. कंप्यूटर्स रिस्क कंदा आहिनि, माना साह खणण में तव्हांखे दुश्वारी कंदा आहिनि. छा कंदा आहिनि जॾहिं जे करे उन्हनि जो सही तरह उन्हनि जो यूज़ नथो कयो वञे या सही जाइ ते जेको उन्हनि खे नथो रखियो वञे. लीड may cause natriureoxicity, high blood pressure, muscle pain, learning disabilities, and among disabilities among children. Barium oxide can cause severe skin irritation and ingestion.
is harmful. The chronic exposure may lead to the damage of central nervous system, spleen, liver, kidney, and bone marrow. इन्हनि शयुनि खे जेको असांजो नुक़सान ॾेई सघे थो ई वेस्ट ऑन ह्यूमन माहौल ते हुन जा अलॻि शयूं आहिनि इंसान ज़ात ते हुन जो अलॻि असर आहे हाँ जी बिल्कुलु बिल्कुलु ब्लड प्रेशर इंक्रीज थी सघे थो तव्हांजो डिसेबिलिटीज़ थी सघनि थियूं तव्हांजो ह्यूमन डैमेज थी सघे थो ठीकु आहे हाणे छा थो चए ई वेस्ट लेजिस्लेशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान जो कानून छा थो चवे ई वेस्ट जे बारे में there is no specific e-waste legislation in the country. However, the policies, laws, and rules which address environmental concerns and hazardous materials include Walaikum Salam. Number 1, National Environmental Policy 2005. Number 2, Pakistan Environmental Protection Act 1997. Hazardous Substance Rules 2003. Punjab Environmental Protection Act 2012. Punjab Hazardous Substances Rules. ही शयूं जेके असां डिस्कस कंदासीं लेजिस्लेशन ऑफ पाकिस्तान इन ई वेस्ट नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी मीन्स कि पाकिस्तान की माहौलियात की क्या पॉलिसी है ठीक हो गया The Punjab Occupational Safety and Health Act 2019 and Pakistan Penal Code, the International Conventions for the Management of Hazardous Waste and E-Waste for which Pakistan is a signatory, includes Basel Convention on the control of transboundary movement of hazardous waste on and their disposal. Transboundary समझो था ट्रांसबाउंडरी माना हिकड़ी पॉइंट खां हिकड़ी जाइ खां ता बी जाइ ताईं ता के शे के कीअं था डिस्पोज कयो कीअं था उनके मोकलियो ठीक है बाबा उनके छा चइबो ट्रांसबाउंड माना फॉर एग्जांपल के बि ब बाउंड्रीज हन शहरन जूं थी सघनि थियूं प्रोविंस जूं थी सघनि थियूं मुल्कन जूं थी सघनि थियूं तव्हां उन्हनि खे डिस्पोज कीअं था कयो या उन्हनि खे तव्हां मूवमेंट कीअं था कयो या उन्हनि खे तव्हां आणियो कीअं था उन एरिया में उन डोमेन में उन जो सेफ्टी प्रिकॉशंस कहिड़ा क्लियर आहे उन खां पोइ छा आहे नंबर 2 आहे स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस मींस के स्टॉकहोल्म हिकड़ी कन्वेंशन आहे जेका हितां जी ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस आहे उनखे कीअं रेजिस्ट कजे उनखे कीअं माहौल खे बचाइजे फ्रॉम ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस Now we will discuss disposal of e-waste in Pakistan. Generation from disposed of e-waste, the result of the material flow analysis showing the quantities of computers, laptops, and desktops to be stored, reused, and disposed of Pakistan from 2005 to 2020. ही हिकिड़ो साल आहे जंहिंमें quantities dispose कयूं वियूं आहिनि of e-waste, handling and processing of e-waste. Handling समझो था बाबा हैंडलिंग माना उन शे खे असां मैनेज कीअं कयूं उनखे हैंडल कीअं कयूं जीअं फॉर एग्जांपल लाइफ में को प्रॉब्लम अचे थो उनखे तव्हां कीअं हैंडल कंदा ठीकु आहे इहा हिकिड़ी टेक्निक आहे हिकिड़ी लॉजिक आहे The handling and processing of e-waste, the processing, recycling, and disposal of electronic equipment, especially computer equipment, is being handled by the informal sector in Pakistan. The informal sector is unorganized and cause of increasing environmental pollution due to non-implementation, absence of environmental laws, and use of primitive technologies for recycling. हिन जो मक़सद छा आहे त जेकॾहिं तव्हां हैंडलिंग या प्रोसेसिंग के ग़लति हथनि में ॾींदव त छा कंदो उहा ओतिरी केयर न कंदा ओतिरो ख़्यालु न कंदा जेका शइ तव्हांजी थ्रू प्रॉपर चैनल ईंदी या जेका तव्हांजी लीगली जेका उन्हनि जा प्रॉपर प्रोसीजर्स ऐं लॉज आहिनि उन्हनि खे तव्हां फॉलो कंदव उन सां छा थींदो माहौल बि ख़राबु न थींदो ऐं गॾोगॾु तव्हांजे इंसान ज़ात ते पोइ असरु न पवंदो ई वेस्ट जे डिस्पोजेबल ते ठीकु आहे The collection of computer scrap is done by the scrap dealers and recyclers, mainly through street scrap collectors and scavengers. Desktops, laptops, and monitors on mutually decided prices. Moreover, people may bring their non-function computers to the computer market where recyclers have their shops and they buy the computer on weight basis. Likewise, इन जो चवण जो मक़सदु इहो आहे
त कुछ शॉप्स जॾहिं तव्हां वेंदा हो का शइ ठाराइण, ठीक है, त ॾिसंदा हो त उहे चवंदा आहिनि बाबा हाणे हीअ शइ ठही नथी सघे या तव्हां इहा शइ नई वठो। उते कुझु डीलर्स हूंदा आहिनि जेके छा कंदा आहिनि, उहो तव्हांजो जेको मटेरियल हूंदो आहे जेको तव्हांजो ख़राबु थी वियो आहे, उहो छा कंदा आहिनि, तव्हांजे किलो जे भाव ते वठंदा आहिनि, टन्स जे भाव ते वठंदा आहिनि। बाबा ठीकु आहे, पहिरियों तव्हां हीअ शइ वरिती हेतिरी, हाणे किलो असां 400 500 जेको उन्हनि जो रेट हूंदो आहे उन जे लिहाज़ सां वठंदासीं। हाणे उहा ज़िमेदारी उन्हनि ते थी अचे, उहो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खे डिस्पोज कीअं था कनि, उसको डिस्पोज कैसे करते हैं। Where recyclers has their shops and they buy the computer on wet basis. Likewise, recyclers in the computer market have also connections with the importers. इन जो चवण जो मक़सदु जेको इहो आहे, माना रिसाइकलर्स जेके हूंदा आहिनि या जेके पाण खां मटेरियल वठंदा आहिनि, उन्हनि जा कॉन्टेक्ट्स छा हूंदा आहिनि, इम्पोर्टर्स। ॿ शयूं हूंदियूं आहिनि, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर। एक्सपोर्टर माना असां पाकिस्तान मां ॿाहिरि कहिड़ी शइ था मोकिलियूं, इम्पोर्टर माना ॿाहिरों कहिड़ा मुल्क पाकिस्तान में शयूं था मोकिलियूं, ठीकु आहे। Dealers and repair shops and most of the computer waste is also collected from these sources. Number one, components and parts of resale in second hand market. हिकिड़ी हूंदी आहे फर्स्ट हैंड मार्केट, माना हिकिड़ी शइ तव्हां नई वरिती त उनखे छा चइबो आहे, फर्स्ट हैंड मार्केट चइबो आहे। हिकिड़ी हूंदी आहे सेकंड हैंड, माना का शइ यूज़ थियल हुजे, पोइ केतिरी यूज़ थियल आहे डिपेंड थो करे, का 6 महीना थियल हूंदी आहे, का साल थियल हूंदी आहे, का 2 साल थियल हूंदी आहे, सब्जेक्ट टू कंडीशन त उनजो स्टेटस छा आहे। Number B, components and parts for resale against repair and refurbishment. Refurbishment समझो था, माना का शइ आहे पुराणी आहे पर उनखे तव्हां ठक ठोक करे उनखे तव्हां नई ठाहियो, उनखे अहिड़े सेटअप में ठाहियो त उहा जेको तव्हांजो ॾिसण वारो हुजे या जेको वठण वारो हुजे उनखे उहा शइ अट्रैक्ट करे। ऐं जेका नई शइ हूंदी ऐं जेका शइ रिफर्बिशमेंट थियल हूंदी उन खां उनजी कॉस्ट छा हूंदी, थोरो घटि हूंदी। अॻिलो चवंदो यार नई शइ मूंखे हेतिरे में थी पवे, रिफर्बिश जेका हेतिरे में थी पए, त वाई नॉट आई शुड गो फॉर द रिफर्बिशमेंट। उन में छा थींदो, तव्हांजा कुझु अमाउंट जेको आहे बची पवंदो। Number C, components and parts for resale against recycling and further processing. Thank you. इहा ई असांजी प्रेज़ेंटेशन ई जेका ई वेस्ट जे बारे में। हाणे ई वेस्ट जे बारे में जेकॾहिं असां हिन प्रेज़ेंटेशन खे समराइज़ कयूं त छा थींदो, ई वेस्ट मीन्स के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट माना घर में पंहिंजो मोबाइल फोन्स आहिनि, कंप्यूटर्स आहिनि, डेस्कटॉप्स आहिनि, इवन जेके तव्हांजो LCD टीवीज़ आहिनि, LED टीवीज़ आहिनि, तव्हांजो चिप्स वग़ैरह आहिनि, ठीकु आहे, उहे छा आहिनि, उहो सॼो तव्हांजो छा में थो अचे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में थो अचे। हाणे असां इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खे छा करिणो आहे, असांखे मैनेज करिणो आहे। असां कहिड़ी तरह इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खे मैनेज कयूं जो उनजो फ़र्क़ु जेको आहे असांजे माहौल ते ऐं असांजे इंसान ज़ात ते न पवे। उन जा कुझु प्रोसेसिस थींदा आहिनि, उन जा कुझु पर्टिकुलर लॉज़ ऐं रूल्स ऐं रेगुलेशन्स आहिनि जंहिंखे तव्हां फॉलो कंदव त उन सां छा थींदो, तव्हां प्रॉपर उन्हनि शयुनि खे डिस्पोज़ करे सघो था। उन या त हिकिड़ी शइ तव्हां कंदा डिस्पोज़ कंदा हो, या वरी हिकिड़ी शइ हूंदी आहे 3R। 3R मीन्स के रिपेयर, रीयूज़, रिपेयर एंड रिसाइकिल। ठीकु आहे, माना तव्हां उनखे बार बार यूज़ कयो, उनखे तव्हां रिकवर कयो, ठीकु आहे, या उनखे तव्हां रिसाइकिल कयो, या उनखे तव्हां छा कयो, रीयूज़ कयो, उनखे चइबो आहे 3R चइबो आहे। त हाणे अहिड़ी तरह कयूं जो उन सां जेके उन जा वर्कर्स आहिनि जेके उनखे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खे छा था कनि, डिस्पोज था कनि, या उन मां जेके उन्हनि जी सेग्रीगेशन था कनि मटीरियल्स जी, अहिड़ी तरह कनि त उन्हनि खे जेके वर्कर्स उन एक्टिविटीअ में इन्वॉल्व आहिनि उन्हनि खे को जानी नुक़सान न थिए या उनजी हेल्थ ते को इशू न अचे। जीअं पाण प्रेज़ेंटेशन में डिस्कस कयो त अहिड़ियूं शयूं डिसेबिलिटीज़ करे सघनि थियूं, तव्हांजी ब्लड प्रेशर खे इंक्रीज़ करे सघनि थियूं, तव्हांजो ॿिया मेंटल डिसऑर्डर करे सघनि थियूं। त इन्हनि शयुनि खां छा करिणो आहे, असांखे बचाव करिणो आहे ऐं उन्हनि खे सेफ ज़ोन में उन्हनि खे छा करिणो, डिस्पोज। ठीकु आहे, दिस प्रेज़ेंटेशन वाज रिगार्डिंग द e-waste and the dispose of e-waste in Pakistan and their legal framework. Thank you so much. Bismillahir Rahmanir Rahim. Start with the name of Allah, who is Rahman and Rahim.
Today our topic of presentation is climate change. We will understand the related things related to climate change and their impacts, their control measures, and how climate change is affecting our environment and how it affects our human life as well. So we will discuss what is climate change. Climate change refers to the long-term changes or long-term pattern in the Earth's climate, including temperature, precipitation, wind patterns, and other indicators. That is called climate change. Earth climate indicators. We will discuss each of them one by one. First of all, we will start with the temperature. Scientific measures temperature at the Earth's surface and in the lower atmospheric to track changes in the global warming, sea level, ice cover, precipitation, ocean acidification, extreme weather events, greenhouse gases, biodiversity, ocean temperature, air quality index. Air quality index also plays a major role in the Earth's climate indicators. Now we will discuss major contributors of climate change. What are the major contributors of climate change? The major contributors of the climate change are human activities that release greenhouse gases into the atmosphere. Here are a few examples of the major contributors. Number one is called burning of fossil fuels. The fossil fuels are coming from the when we are burning oil, gas, or petrol. The burning of coal, like oil and natural gas, releases a large amount of carbon dioxide into the atmosphere, which is the most significant contributors to the climate change. Number two is called deforestation. As we all know that trees absorb carbon dioxide from the atmosphere, so cutting down forests reduces the ability to absorb carbon dioxide. Additionally, burning and clearing of forest releases carbon dioxide into the atmosphere. On the third number, that is called agriculture. Like livestock farming and the use of fertilizers releases methane and nitrous oxide, two potent greenhouse gases. Land use changes, industrial processes, transportation, waste, energy production. If we will discuss in detail regarding the land use changes, urbanization and the conversion of natural land into agriculture or urban use can increase the amount of heat trapping into the atmosphere. And we will discuss regarding the industrial processes. Industries such as cement and steel manufacturing release large amount of carbon dioxide into the atmosphere. Transportation, like cars and other vehicles, release large amount of carbon dioxide and other pollutants into the atmosphere that contribute to the climate change. Like waste, landfills and waste incineration releases methane, a potent greenhouse gases. Energy production, the use of fossil fuels based on energy and hydroelectric power generation also contribute to the climate change. Effects of climate change. The effects of climate change can be broadly categorized into three main categories, and we will discuss them one by one. Number one is called environmental effects. These include changes in temperature, precipitation, sea level, and disturb the ecosystem as well. And number two is called social and economic effects. These include effects on human health, food security, water availability, and economic development. And number third is called political and security effects. Climate change can exacerbate existing conflicts, create new ones, and threaten the stability of countries and regions. Temperature and the precipitation changes, sea level rises, changes in ecosystems and biodiversity also is the one of the main environmental effects of climate change.
Like climate change can alter the distribution and abundance of species and can cause changes in the timing of seasons, such as earlier spring, bird break, or later fall foliage. These changes can disturb the delicate balance of ecosystems, leading to the declines in the biodiversity. And the last is called ocean acidification. As the ocean absorbs carbon dioxide from the atmosphere, it becomes more acidic, which can have a impact, severe impact on marine life, and it can make it harder for the shellfish and coral to build their shells and skeletons, and can make it harder for fish to find food and reproduce. Extreme weather events, changes in the air quality index, uh, climate change can also lead to changes in air quality, as warmer temperature can cause increased ground level ozone and smoke, which can aggravate respiratory problems. This picture shows social and economic impacts of climate change, like relocation of whole towns, shrinking productivity of harvests, disease will spread due to the higher temperatures, the cost of adapting coastal areas to rising sea levels, loss of the capacity to work due to heat, more wants to gain access to limited resources, fresh water will be in short supply in some areas. Social and economic impacts of climate change. Now we will discuss the social and economic impacts of climate change one by one. Number one is called displacement and migration. As we discussed in the previous figure, health impacts, food security, infrastructure, and property damage. Tourism and recreation, economic impacts. The climate change can also lead to economic impacts, as changes in the temperature and precipitation patterns can affect the availability of natural resources such as timber, fish, and water. This can also lead to the economic losses as well as increased costs for production and delivery of the goods and services. Political and security impacts of climate change. Number one is called international relations. Number two is called political instability. Number third is called national security. Number fourth is called border disputes. Number five is called international terrorism. And number six is called migration and displacement. These all are coming under the category of political and security impacts of climate change. Mitigation of climate change is how we can mitigate the effects related to the climate change. Mitigation of climate change refers to the actions taken to reduce or prevent the emissions of greenhouse gases. It means directly we are concerned with the burning of fossil fuels. We should shift ourselves from burning of fossil fuels to the renewable energy sources, which are the main drivers of climate change. Mitigation can be achieved through a combination of different measures, including reducing energy consumption, increasing the use of renewable energy, as I discussed earlier, that we can use the renewable energy sources like solar, hydel, wind are all coming under the category of renewable energy. Carbon pricing, land use changes, cleaner transportation, industrial processes, energy storage, technology innovation. Means that we should innovate further in technology, encouraging research and development of new low carbon technologies and processes can help to reduce emissions and create new jobs and economic opportunities. Global efforts to combat climate change. The United Nations Framework Convention on Climate Change. This is an international treaty signed in 1992.
that aims to stabilize greenhouse gases concentrations in the atmosphere at a sea level that would prevent dangerous anthropogenic interface with the climate system. Anthropogenic means ke the concern which is related to the human activity. Number two is called the Paris Agreement. Number third is called Intergovernmental Panel on Climate Change, which is also called as IPCC. Green Climate Fund, the Clean Development Mechanism. There is presentation of mine in on the climate development mechanism, which is already available on my YouTube channel. The Global Environmental Facility, the United Nations Development Program, which is called as UNDP. This is the UN Global Development Network that helps countries to achieve the Sustainable Development Goals, SDGs, which includes SDG 13 on climate change. Number 13 is SDG, Sustainable Development Goal, that is totally related to the climate action, climate change. Individual steps that can be taken to combat climate change means everyone should take steps based upon their capacity, reduce, reuse, recycle, use energy efficient appliances, use public transportation, carpool, bike or walk, eat less meat and dairy, plant trees and shrubs, support renewable energy, support political action, educate yourself and others. Warning: we are at the alarming situation. It's worth noting that the time frame in which these catastrophic impacts may occur is uncertain and will depend on a number of factors, including the rate of emissions reduction, effectiveness, and the mitigation and adaptation efforts and the feedbacks of climate change. However, it is seen the window of opportunity to act is closing, and longer we wait, the more difficult and the costly it will be to avoid the worst impacts of climate change. Thank you so much. This was our session on climate change, and we will further contribute to climate change, and we will deliver more lectures on climate change in our next episode. Thank you. Today, our topic of presentation is what is difference between weather and climate. Definition and the difference between weather and climate. Weather refers to the short-term atmospheric conditions of a specific place, such as temperature, precipitation, and wind. Climate, on the other hand, refers to the long-term patterns of weather in a certain area, including average temperatures and precipitation over many years. If you see the diagram on right hand side, there is a picture available which shows the difference between weather and climate. As we see, the picture shows weather means ke short term state of the atmospheric versus climate, and the climate shows long term pattern of weather. Climate change is the change in the long term pattern of the weather, specifically an increase in global temperatures caused by the human activities such as the burning of fossil fuels. Some of the effects of climate change include sea level rise, more intensive heat waves, and increased frequency of extreme weather events. Now we will discuss regarding the elements of climate. Climate is described by referring to its elements. Number 1, temperature. Number 2, precipitation. Number 3, humidity. Number 4, wind. Number 5, cloud cover. Number 6, air pressure. Number 7, ocean currents.
Now we will discuss these 7 elements one by one. Temperature. Temperature is the measure of warmth or coldness of a air and can be measured using thermometer. It is one of the key elements of climate and is affected by factors such as altitude, latitude, and the presence of nearby bodies of water. Number two, precipitation. Precipitation means that we may predict anything. Precipitation refers to any form of water that falls from the atmosphere, including rain, snow, sleet, and hail. It is another important element of climate and varies dependent on factors such as location, altitude, and season. Number three, humidity. Humidity is the measure of the amount of water vapor in the air. High humidity can make the air feel warmer and can affect the weather, such as causing thunderstorms and fog. Number four, wind. Wind is the movement of air across the surface of Earth and is caused by differences in temperature and pressure. It can be affected by factors such as topography, atmospheric circulation, and the Earth's rotation. Number five, cloud cover. The amount of cloud cover in an area can affect the amount of sunlight that reaches the surface and can influence the temperature and precipitation patterns. Number six is air pressure. Number seven is called ocean currents. Now we will discuss regarding the factors of climate. Climate factors are the characteristics of a specific place that affect its temperatures and precipitation. Number one is called latitude, altitude, distance from the ocean, ocean currents, topography, current circulation, greenhouse gases, and human activities. If we'll discuss regarding the distance from the ocean, coastal areas tend to have a milder climate due to moderating effect of the ocean on temperature, while inland areas can have a more extreme climate. Like topography, in topography, the presence of mountains, deserts, and other landforms can affect the local climate by influencing the temperature, precipitation, wind patterns, and atmospheric circulation. If we talk about the atmospheric circulation, the large scale movement of air in the atmosphere can affect temperature, precipitation, and wind patterns, leading to different climate in different regions. Greenhouse gases. The concentration of greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, and water vapor in the atmosphere affect the Earth's temperature, leading to climate change. Number last but not the least, human activities. Human activities such as burning of fossil fuels, deforestation, and land use can also affect the Earth climate by increasing the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Factors of weather: temperature, moisture, air pressure, wind, topography, atmospheric circulation, ocean currents, and human activities. Some of them we discussed earlier. Now we will discuss another things which we didn't cover last. Atmospheric circulation. The large scale movement of air in the atmosphere can affect temperature, precipitation, and wind patterns, leading to different weather in different regions. Ocean currents, human activities like pollution, urbanization, and land use change can also affect the Earth's weather by altering the local temperature, precipitation, and air pressure. How climate zones are determined by the factors. Climate zones are regions of the Earth that have similar climate patterns based on factors such as temperature, precipitation. There are several different ways to classify climate zones, but one of the most widely used in the Köppen climate classification system. The Köppen system categorizes climates into 5 main groups. Number one is called tropical, number two is called dry, number three is called temperate, number four continental,
Number 5, polar. In tropical, these climates are characterized by high temperatures and high precipitation year around. They are found near the equator. In the dry, these climates have the little precipitation and can be hot or cold. They are found in areas such as deserts in high pressure regions. Temperate, these climates have moderate temperature and precipitation. They are found in areas such as the mid-latitudes. Continental, number 5, polar. These climates have the cold temperature and low precipitation. They are found in the high altitude near the poles. Now we will discuss regarding the natural causes of climate change. Number 1 is called solar radiation. Number 2, volcanic activity. Number 3, orbital variations. Number 4, ocean currents. Number 5, plate tectonics. Number 6, changes in the amount of greenhouse gases in the atmosphere. Number 1 is regarding the solar radiation. Changes in the amount of solar radiation that reaches the Earth can cause the planet's temperature to fluctuate. This can be caused by variations in the sun's output or by changes in the Earth's orbit or tilt. Volcanic activity. Large volcanic eruptions can release large amount of ash and gases into the atmosphere, which can reflect sunlight and cool the planet's surface or trap heat and warm it. Orbital variations. Changes in the Earth's orbit and tilt can affect the amount of radiation received by the planet and influence climate patterns. Number 5, ocean currents, plate tectonics. Number 6, changes in the amount of greenhouse gases in the atmosphere. The greenhouse gases like carbon dioxide, methane, and water vapor play a critical role in regulating the Earth's temperature. Any change in the concentration of these gases can cause temperature fluctuations. Now we will discuss about the human causes of climate change. As we discussed earlier, there are two causes of climate change. One is called natural, which is beyond our approach, and other is called human causes, which is also called as anthropogenic, means के man-made. Burning of fossil fuels, the burning of coal, oil, natural gas for energy releases large amount of carbon dioxide and other greenhouse gases into atmosphere, which trap heat and warm the planet. Number 2 is called deforestation. Trees and other vegetation absorb and store carbon dioxide, so cutting down forests and other natural habits reduces their ability to absorb carbon dioxide and contributes to global warming. Number 3 is called agriculture. Agricultural activities such as cleaning land, raising livestock, and using fertilizers and pesticides can also release greenhouse gases and contribute to climate change. Number 4 is called land use change. Urbanization, mining, and other human activities that alter the land surface can also contribute to climate change by reducing the ability of the land to absorb and store carbon dioxide. Number 5 is called industrial processes. Industrial processes such as cement production, manufacturing, chemical production also contribute to the release of greenhouse gases. Number 6 is called transportation. The burning of fossil fuels for transportation also releases large amount of greenhouse gases into the atmosphere. Now we will go on less slide. This is called potential effect of climate change. Sea level rise, extreme weather events, changes in precipitation patterns, damage to ecosystems, loss of biodiversity, damage to human health, economic impacts, displacement of people. So if we see the sea level rise, as the Earth's temperature increases, ice caps and glaciers melt,
and the ocean expands, leading to rise in the sea level, and that can flood coastal areas and low-lying islands. Extreme weather events, changes in precipitation patterns, damage to ecosystem. Yeah, this is a very important point. Climate change can alter the timing of seasonal events and disrupt the relationship between species, leading to the decline or extinction of many plant and animal species. Loss of biodiversity. Climate change can also cause shifts in the disruption of species, leading to a loss of biodiversity in many areas. Damage to human health. Climate change can lead to an increase in the spread of disease, heat-related illness, and the frequency of extreme weather events which can harm human health. Economic impacts. The effects of climate change can disturb the industries such as agriculture, fishing, tourism, leading to economic losses and job losses. Number 7, displacement of people. Climate change can cause sea level rise, coastal erosion, and extreme weather events leading to a displacement of people from their homes and communities. Like in flood times, the people are displaced from their own regions and their homes. Role of government and international organization to mitigate the effect of climate change. We will discuss the role of government in international organization, that how they come forward to mitigate the effect of climate change. Number 1, setting emissions reduction targets, investing in clean energy, promoting energy efficiency, implementing carbon pricing, providing funding and support for climate adaptation, encouraging international cooperation, encouraging public awareness and education. How can we reduce the carbon footprints? By using, by following aforementioned steps, we may reduce the carbon footprints. Number 1, using energy efficient appliances and light bulbs, using public transportation, carpooling or biking, planting trees and maintaining green spaces, eating a plant-based diet, supporting clean energy, conserving water, using eco-friendly products, supporting political acting on climate change. The latest research and scientific understanding of climate change. Climate change is happening. The last research confirms that the Earth's climate is changing, and the primary cause of change is the human activity, like man-made, primarily the burning of fossil fuels, deforestation, and agriculture. The warming trend is unequivocal. Climate change is affecting the oceans. Climate change is affecting biodiversity. This is a need for urgent action. Conclusion. Now, if we conclude the weather and climate are two closely related but distinct concepts. Weather refers to the short-term conditions of the atmosphere, while climate refers to the long-term pattern of the weather conditions in a specific area. Both weather and climate are influenced by a complex interplay of natural and human-induced factors. Understanding the elements and factors that influence weather and climate is crucial for predicting and managing their impacts on our environment and society. Climate change is a pressing global issue, and it's important that we take actions to mitigate the effects of climate change and adapt to the changes that are already happening. Individuals, governments, and international organizations have a role to play in reducing greenhouse gases emissions. Investing in clean energy,
and promoting sustainable practices. With collective efforts, we can work towards a more sustainable future. Thank you so much. This is from my side, and we will be continue in next session with a different topic of mechanical domain. ये फायर ट्रायंगल होती है। अब अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज हमारे पास नहीं होगी तो हमारे पास फायर नहीं होगी या आग नहीं लगेगी। अब जैसे हीट सोर्स है, हीट सोर्स हमारा सन हो गया, ठीक हो गया। फ्लेमेबल सोर्स जो हमारे पास ड्राई डेड हो गई, लीव्स हो गए, ट्रीज हो गए, ठीक हो गया। और ऑक्सीजन तो हमारे पास इन्वायरमेंट में है ही है। अब अगर तीन चीजें होती हैं, अवेलेबल होती हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस वजह से हमारी फायर होती है। तो इसको अगर मैं कंटिन्यू करूं हमारे फॉरेस्ट फायर के लिहाज से, तो फायर फायर इन तीनों की चीजों की वजह से होती है। दैट इज द मोस्ट कॉमन हैजर्ड इन फॉरेस्ट फायर्स, ठीक हो गया। फॉरेस्ट फायर ये होती है। वाइल्ड फायर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डेंजरस नेचुरल फिनोमेना स्टडीड इन द वर्ल्ड। अब तक जो है मीन्स के ये खतरनाक स्टडी के रिसर्च के लिहाज से ये किया गया है कि ये खतरनाक चीज है जिसकी वजह से हम लोगों की या वाइल्ड लाइफ मीन्स के फॉरेस्ट जिसमें आग लगती है जंगलों में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ठीक हो गया। द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड इन इम्पैक्ट्स ऑन द एटमॉस्फेयर। अब फॉरेस्ट फायर की वजह से होता क्या है? फॉरेस्ट फायर की वजह से ये होता है कि हमारे मीन्स के जिसकी वजह से इमिशंस होती हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो हमारे इन्वायरमेंट पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक हो गया जी, ये हमारा मेन रीजन है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर होती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। काजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर। ये काजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर से ये मुराद है कि कॉज मींस के हम दो चीजें डिस्कस करेंगे कि हमारे फॉरेस्ट काजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर होते क्या हैं। एक तो हमारी होती है इन्वायरमेंटल की वजह से, जिसको लाइट मींस के एज अ एक्ट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। और दूसरा होता है हमारा ह्यूमन रिलेटेड विच आर कंट्रोलेबल। जो इन्वायरमेंटल है दैट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल, दैट इज बियॉन्ड अवर अप्रोच, वो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है। जो ह्यूमन रिलेटेड है वो हमारे कंट्रोलेबल है। अब जो ह्यूमन मीन्स के अगर हम ह्यूमन रिलेटेड पे आए तो ह्यूमन की केयरलेस में जो है इज अ कॉमन काज ऑफ फॉरेस्ट फायर। ठीक हो गया। हम लोगों की इंसानों की मीन्स के बेख्याली की वजह से या ध्यान ना देने की वजह से जो है फॉरेस्ट फायर लगती है। स्मोकिंग होती है अनदर लीडिंग काज फायर फॉरेस्ट फायर। आरसान। अब आरसान क्या होती है ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। ये वो होती है क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। मीन्स की अजब खुद आग लगाना किसी भी चीज को, ये चीजें होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। और नेचुरल काजेज। अब नेचुरल काजेज में क्या होता है? मेनी फॉरेस्ट फायर स्टार्ट फ्रॉम द नेचुरल काजेज सच एज लाइटनिंग व्हिच सेट टीज ऑन द फायर। अब इसका मिसाल ये है कि हम लोग इस तरह दे सकते हैं कि जैसे हमारी ऑटोमोबाइल इंजन्स होती है ना, उसमें एक होता है स्पार्क इग्निशन, एक होता है कंप्रेस इग्निशन। कंप्रेस इग्निशन में ये होता है कि हमारी स्पार्क प्लग नहीं होती। कंबशन चेंबर में इतना तो उनका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि उस पर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है जिसकी वजह से आग लग जाती है। इसको हम नेचुरल काज से कंसर्न कर सकते हैं। लाइटनिंग होती है जिसकी वजह से ये हमारे समर सीजन में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लो ह्यूमिडिटी हो जाती है, हायर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो जाते हैं जिसकी वजह से ये नेचुरल काज की वजह से फॉरेस्ट फायर भी होती है। अदर कॉमन काज ऑफ वाइल्ड फायर इंक्लूड इक्विपमेंट यूज एंड मेल फंक्शनिंग, इंजन स्पार्क, एयरसॉन लाइटनिंग। अब इक्विपमेंट यूज एंड मेल फंक्शनिंग में क्या आ जाता है? इसमें ये हो जाता है हमारे जो इक्विपमेंट वहां पे फॉरेस्ट में यूज करते हैं। ठीक हो गया जी। अब वहां पे अगर स्पार्क अरेस्टर नहीं लगा हुआ तो ये होता है कि स्मॉल इग्निशन जो होती है एज अ काज ऑफ फॉरेस्ट फायर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। फॉरेस्ट फायर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर। मींस के फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या होता है हमारे यहाँ, क्या होता है कि फॉरेस्ट फायर की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। और एक चीज ये भी है कि जो इंडिया है, इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली जो 90% फॉरेस्ट फायर इंडिया में होते हैं आर द मैन मेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर।
अब हमारा इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ, इसका मकसद ये है कि फॉरेस्ट फायर की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक हो गया जी। अब पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे हम एनवायरनमेंट के लिहाज से। फॉरेस्ट फायर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया, एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट द ग्रीन हाउस एंड एडिशन, ठीक हो गया, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होती है, कॉजिंग फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइडिंग, ये जो होता है हमारे इन्वायरमेंट पे आ जाता है। फायर कैन बी डेडली डिस्ट्रॉइंग होम्स, होम को नुकसानदार होती है, वाइल्ड हैबिटेट, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। दूसरा है कि इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड फायर ऑन ह्यूमन लाइफ। मतलब इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड फायर ह्यूमन लाइफ से मुराद ये है कि वाइल्ड फायर का हमारे इंसानों पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक हो गया, उसमें ये हो जाता है वाइल्ड फायर्स इंक्रीज एयर पॉल्यूशन इन सराउंडिंग एरियाज एंड कैन इफेक्ट द रीजनल एयर क्वालिटी, जिसकी वजह से हमारी आइज पे प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे मीन्स के सांस लेने में दुश्वारी होती है, एंड मोर सीरियस डिजीज होते हैं इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग लंग फंक्शन, अस्थमा का, हार्ट फेलियर इन द प्री मेच्योर डेथ एज वेल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ठीक हो गया कि ये चीजें होती हैं, और मीन्स के हमारे फॉरेस्ट फायर की वजह से हमारे अस्थमा मीन्स के हमारे लंग्स पे प्रॉब्लम होता है, और चीजें होती हैं। सीओपीडी एक टर्म कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये प्रॉब्लम होता है, प्री मेच्योर डिजीज होते हैं फॉरेस्ट फायर का हमारी ह्यूमन लाइफ पे। This is from my side, and sir, from next slide, Mr. Zabit will continue. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। जंगल में जो आग लगती है उसमें जो है ना दो किस्म के होते हैं। सरफेस फायर, सरफेस फायर वो होती है जो सर दरख्तों में रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से और तपिश की वजह से लगती है। उसके फ्लेम्स फिर नीचे ग्रास पर गिरते हैं, उससे जो है ना वो सारे जंगल में तबाही मचा देती। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये सर सरफेस फायर की एग्जांपल है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके साथ है सर क्राउन फायर। क्राउन इटसेल्फ स्टेज के ताज, ये आग की वो किस्म है सर जो दरख्तों के ऊपर वाली सतह पर लगती है। अगर हमारे दरख्त जो है ना पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से में होंगे और विंड का डायरेक्शन नीचे होगा तो ये सेकंडों में जो है ना कई किलोमीटर स्प्रेड हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ होगा तो ऑटोमेटिकली उस स्पीड से जो है ना ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। सर इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर में ये आता है कि ये कटे हुए हमारे जो दरख्त होते हैं जिन्हें हम हाउस में यूज करते हैं या जिससे हम कोयला बनाते हैं, तो उनको इफेक्ट करेगा, और इससे आसपास के इलाके जो है ना इफेक्ट होंगे, और मुख्तलिफ जानवर, इससे जो वाइल्ड लाइफ है उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा, और आसपास की जो आबादी है उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा जो है ना CO2 की एमिशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे हमारा एनवायरनमेंट बुरी तरह से डैमेज होगा, और उससे ओजोन लेयर पर जो है ना हमारे ओजोन लेयर जो है ना हमारा इफेक्ट होगा, और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होंगी, और जो लोग रोजगार किसी भी फॉरेस्ट से करते हैं उन पर जो है ना एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट पे ही हूँ मैं, सॉइल इरोजन वाली जो है। अच्छा, इसके बाद वाली आपका द नीड्स ऑफ द फायर मैनेजमेंट। सर दुनिया में जितने भी जो है ना तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बड़ा एक जंगलात का सिलसिला है, या शिकागो में एक बड़ा जंगलात का सिलसिला है, उन्होंने एक प्रॉपर टीम अरेंज की हुई है और टेक्निकल रिसोर्सेज उनके पास हैं, और उन्होंने जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के साथ जो है ना वो एक फंडिंग का एक पैकेज रखा है, जिससे वो लोग जो है ना ट्रेंड स्टाफ रखते हैं, फायर टेंडर्स वगैरह, जिसकी वजह से वो आग को जो है ना एक मखसूस टाइम में कंट्रोल कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर। सर ये हमारे पास है केस स्टडी, जिसमें दो केस स्टडी है, एक शिकागो है और शिकागो फायर है, द ग्रेट शिकागो फायर एंड पेस्टिगो फायर के नाम से। सर ये शिकागो फायर जो है ना 8 अक्टूबर 1871 को लगी थी,
जिसकी वजह से सर काफी जानों का नुकसान हुआ, जो कि 9 किलोमीटर तक फैल गई और जो कि 19वीं सदी की यूएस की सबसे बड़ी आग थी। मकामी लोगों का कहना है कि एक काव के जो है ना वो लैंटर्न पर वो लात मारने से जो है ना आग सारे उसमें फैल गई और 3 दिन तक ये आग जो है ना मुसलसल चलती रही। फिर बारिश हुआ तो उससे जो है ना वो आग वो अपर वाली साइड पर ग्लेशियर्स थे वो भी मेल्ट हुए, वो फ्लड आया और उसके अलावा जो है ना वो बारिशों की वजह से वो आग कंट्रोल हो गया। और जराये का कहना था कि 300 लोग जो है ना इससे उनकी डेथ हुई है और 1 लाख लोग जो है ना इससे वो होमलेस हुए। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट सर। ये सर पिक्चर है जिसमें उस वक्त ये घर मैक्सिमम जो है ना वुड के बने हुए थे, सारा शहर जो है ना जल गया था। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर ये इसके साथ है द पेस्टिगो फायर। ये बीच में सर मिचिगन लेक है और एक साइड पर शिकागो है और एक साइड पर जो है ना हमारा हॉलैंड का ये पेस्टिगो सिटी आता है। तो इसमें भी सेम डे में जो है ना 1871 में आग लगी थी और इसी दिन जो है ना शिकागो में आग लगी थी और जो है ना इसने तकरीबन 1.2 मिलियन एकड़ पर जो है ना जंगलात को जला दिया था और 12 कम्युनिटीज के लोग जो है ना इससे अफेक्टेड हुए थे। और चूंकि जो है ना वो रिकॉर्ड जल गया था तो उसमें से जो है ना कुछ कहते हैं कि 1200 लोग जो है ना इफेक्ट हुए हैं और कुछ का कहना था कि 2500 लोग जो है ना इस आग की वजह से इफेक्ट हुए। सर अब जो है ना सिकंदर भाई कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि सिकंदर साहब आए, अयूब साहब आपका कैमरा ऑन है और पता नहीं आप कहाँ में घुमा रहे हैं भाई, तो अपना कैमरा तो बंद कर दीजिए आप जहाँ भी हैं। ठीक है सिकंदर, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। सर ये पेस्टिगो फायर की एक जो ना मैप है जिसमें मिचिगन लेक दिखाया गया है और पेस्टिगो फायर शिकागो, चूंकि सेम डे में ये दोनों इवेंट्स हुए थे, इस कंडीशन में बहुत बड़ी तबाही मच गई थी। तो ऑलमोस्ट 1200 से 2500 के करीब तकरीबन लोगों की डेथ हो गई और अच्छी खासी कम्युनिटियां जो ना डैमेज हो गई और लोग होमलेस हो गए। नेक्स्ट सर। एक सर डेटा एनालिसिस है यहाँ पर हमने वाइल्ड फायर की है जो कि 2021 में वाइल्ड फायर के सीजन में एक पेशेंट को यूएस ने की है कि यहाँ पर जो है ना इस वक्त 2021 की जो है बताया है इन्होंने कि यहाँ पर खुश्कसाली 98% के चांसेस हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस है कि हीट वेव की सूरत में जो है ना ये थ्रेट हो सकता है वाइल्ड फायर का। और 2020 का स्टैटिस्टिक्स ये कहता है हमें कि देयर वर 58,950 वाइल्ड फायर कंपेयर्ड विद 477 इन 2019। 2020 के मुकाबले में जो 58,950 वाइल्ड फायर हुए हैं उसमें 2019 में 50,477 वाइल्ड फायर के जो ना केसेस आए। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंटर एजेंसी फायर सेंटर अबाउट 10 मिलियन एकड़ पर जो ना तकरीबन 2020 में पूरा एरिया उस वाइल्ड फायर की जद में आ गया, जबकि 2019 में 4.7 मिलियन एकड़ जो ना उसकी जद में आया और आग ने तबाही मचा दी। अच्छा खासा एरिया उन्होंने जो ना फायर की जद में आके बर्न आउट हो गया। और कैलिफोर्निया के 6 बड़े टॉप जो ना लार्जेस्ट जो ना एरिया में वाइल्ड फायर की रिपोर्ट हुई है 2020 में। और जो काल फायर की रिपोर्ट है उसमें है कि कैलिफोर्निया के रिकॉर्ड के मुताबिक 4.3 मिलियन एकड़ जो ना डैमेज हो गया और 10,500 का जितना स्ट्रक्चर था और 33 पीपल की डेथ हो गई इस 2020 में। सर नेक्स्ट। ये एक एनुअल डाटा स्टैटिस्टिक्स हमने कलेक्ट किया है थ्रू आउट फ्रॉम 1980 से लेकर 2020 तक। इस डाटा को अगर देखा जाए तो 1980 में जो वाइल्ड फायर के केसेस हैं आप उसका रेशियो देखें, एकर्स बर्न हुआ है ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग का, और इसी को अगर हम कंपेयर करें 2020 में तो आप देखेंगे कि ये एक्सीड कर गया 10 एकड़ तक।
इट मींस ये एक कम्युनिटिव रिपोर्ट के मुताबिक जस्ट 1980 से 2020 तक के जितने वाइल्ड फायर हुए हैं, इनमें जो है कितना नुकसान ह्यूमन लाइफ को हुआ है, कितना इन्वायरमेंट को हुआ है इटसेल्फ, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग होमलेस हुए हैं। चूंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुई है, शहर डेवलप हुए हैं, तो ट्रीज और फॉरेस्ट को काटा गया है, उसको एज सोर्स ऑफ वुड यूज किया गया, सोर्स ऑफ फ्यूल यूज किया गया, और उसे मटेरियल स्ट्रक्चर लेके जो ना लोगों को डेकोरेशन की है, सिटीज को डेवलप किया है, और इंडस्ट्रीज में जो CO2 की इमिशंस हुई है, इससे हमारे ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा खतरा हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, डैमेज हो गई। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की वजह से हमारे पास ग्रीन हाउस की गैसेस बड़ी इम्पैक्ट हुई हैं, और अर्थ का टेम्परेचर अच्छा खासा रेज हो गया। और आजकल साइंटिस्ट इसी पे रिसर्च कर रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल द अर्थ टेम्परेचर, हाउ टू कंट्रोल द CO2 इमिशन, एंड हाउ टू कंट्रोल द टू अवॉइड द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट सर। ये सर एक और केस स्टडी है, फॉरेस्ट फायर इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फायर फाइटर ऑस्ट्रेलिया के, इनको वेल ट्रेन और वेल एक्सपर्ट, तकरीबन एक्सपर्टीज तक की नॉलेज दी जाती है। ये फायर को टैकल करने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन आल्तो एक्ट ऑफ गॉड को कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो जो है ना आग की सूरत में हो, चाहे वो सन की रेडिएशन से पूरे जंगल तबाह हो जाए, इसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन इसके लिए इसकी मैनेजमेंट, इसकी हम कंट्रोल वे में इस पे काम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है, बुश फायर क्राइसिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट वाइल्ड फायर डिजास्टर इन मॉडर्न हिस्ट्री। रिसर्च के मुताबिक ये है कि अराउंड 3 times higher than earlier study estimated हुए कि 143 million mammals और 2.46 billion reptiles and 180 million birds and 51 million frogs were harmed। इस पूरी बायोडाइवर्सिटी की जो लाइफ है, जो नेचर की ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, जो नेचर में वो एनिमल्स की लिविंग थिंग का जो वे ऑफ स्टाइल है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं अमल दखल ह्यूमन का भी है, कहीं ना कहीं अमल दखल जो है आपका नेचुरल डिजास्टर्स का है। नेक्स्ट सर। 2019 और 20 में सर ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर के सीजन को जो है ब्लैक समर फायर के नाम से कहा गया है, और ये जो 2019 और 20 के जो स्टेटस के मुताबिक ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर एक्सीड कर गई है, जिसमें सबसे कम रेनफॉल हुई है। और 2020 मार्च में ब्लैक समर फायर ऑलमोस्ट तकरीबन 19 मिलियन एकड़्स पर जो है ना तबाही मचा चुकी है, डिस्ट्रॉय किया इसने 3000 हाउसेस है, और तकरीबन 33 पीपल इसमें जो है ना उनकी डेथ हुई है। और ये ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में लार्जेस्ट रिकॉर्डेबल फॉरेस्ट फायर रहा है। विक्टोरिया हैड अ सीजन, इसके साथ विक्टोरिया भी हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर्स में आया है, इसका भी काफी एरिया बर्न हुआ है। नेक्स्ट सर। बुश फायर के बारे में सर ये है कि तकरीबन इसकी लेवल मोर देन 15.6 एकड़ पर बढ़ गई है, बल्कि इससे ज्यादा हुई है, और जिससे 25 लोगों की डेथ हुई है और डिस्ट्रॉय है 2000 होम्स। विक्टोरिया के फायर में ये सारी चीजें हुई, ये वो डेटा है जो कि रिकॉर्ड किया गया है और जो शो हुआ है। एक्सपर्ट के मुताबिक 1 बिलियन एनिमल्स हैव बीन डाइड सिंस द फायर बिगन इन सितंबर। जो सितंबर में आग हुई है 1 बिलियन जो ना एनिमल्स की डेथ हुई है, और ये बहुत बड़ा लॉस है हमारी बायोडाइवर्सिटी में, या नेचर की ब्यूटी तकरीबन खत्म हो गई। नेक्स्ट सर। अमेज़न फायर के बारे में सर एक और रिसर्च है। इन 2020 मोर देन 2500 मेजर फायर बर्न अक्रॉस द ब्राजीलियन अमेज़न बिटवीन लेट मई एंड अर्ली नवंबर। ये मई के एंड में और नवंबर के स्टार्ट में जो ये आग लगी है, जिसने तकरीबन 2500 जो ना एरिया जो ना 2500 मेजर फायर्स तकरीबन हुई है इस दौरान में सर, और इसने तकरीबन 41% जो ना अमेज़न का जो एरिया है 41% बर्न आउट कर दिया। नेक्स्ट। अच्छा सर, जितना
हमने स्टडी किया ट्रीज के बारे में और फॉरेस्ट फायर के बारे में। इसी तरह हम जस्ट एक दरख्त की अगर हम मिसाल लेते हैं, द पावर ऑफ वन ट्री, आप देख सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी ब्यूटी और कितनी नेमतों से हमें नवाजा है। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago। 20 साल पहले वो टाइम था कि जिस बेस्ट टाइम था जिसमें हम प्लांटेशन कर सकते थे। द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ, राइट नाउ हम कर सकते हैं, ताकि हम इससे एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचा सके और हम ग्लोबल वार्मिंग के से बच सकें, ओजोन डिप्लीशन से बच सकें, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन से बच सकें, हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिले, लोगों की हेल्थ बच सके। नेक्स्ट सर। एक दरख्त की खासियत क्या है? अ ट्री हैज द एबिलिटी टू प्रोवाइड एन एसेंशियल ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन आवर प्लैनेट एंड द पावर टू रिमूव हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कि हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करती है फॉर हेल्थियर ब्रीथ के लिए। एक दरख्त के बारे में कहा जाता है अ ट्री कैन एब्सॉर्ब अराउंड 21 kilograms ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। 21 kilograms ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर ये एब्सॉर्ब करता है। हाउएवर इसने हमें जना इससे एक दरख्त की वजह से हमें कितना ऑक्सीजन मिल सकता है, हम इसकी अगर रिसर्च पे जाएं तो हमें बहुत ज्यादा फायदा है। और ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ 100 years one tree could absorb around a ton of CO2। it's a huge amount, बहुत ज्यादा है। और कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनकी लंबाई बहुत ऊंची है, जिनके पत्ते जना एक शेड की सूरत में जना हमें कवर देते हैं, जिसमें हम समर की हॉट वेदर कंडीशन में हम जना उस गर्मी की शिद्दत को महसूस नहीं करते, जो कि कार्बन को एब्सॉर्ब करते हैं और हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सर। हाउ डू ट्रीज हेल्प द ओजोन लेयर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई दरख्त से हमें कैसे ओजोन लेयर को बचा सकते हैं। सीधी सी बात है सर, इसमें यह है कि एनवायरमेंटल का इफेक्ट से बचने के लिए ये दरख्त CO2 एब्सॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जो फ्रेश एयर एनवायरमेंट में होती है वो ओजोन के लिए फायदेमंद होती है और ह्यूमन के लिए फायदेमंद होती है। जितने भी पोल्यूटेंट गैसेज हैं उनको ये एब्सॉर्ब करती है दरख्त और हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। Why is it important to protect ozone layer? ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? ये सबसे इम्पोर्टेंट आजकल का टॉपिक है, बल्कि आज के बाद से जितने भी 10-20 साल की असेसमेंट जो अब तक जितने साइंटिस्ट रिसर्च के तौर पे कर रहे हैं, वो उनका कंसर्न यही है कि ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, इसको इम्पोर्टेंट क्यों है प्रोटेक्ट करना, ताकि अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हम पर इफेक्ट ना करें और हमें कार्सिनोजेनिक या दूसरी खतरनाक बीमारियां ना हो। इसी वजह से एक दरख्त की कीमत यह है कि मुख्तलिफ पोल्यूटेंट गैसेस को ये अब्सॉर्ब करती है और हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। यानी फार्मिंग का सिलसिला आने वाले दौर में बहुत आम होगा। ट्रीज को ग्रो करना चाहिए, हमें लगाना चाहिए, हमें बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रखनी चाहिए, जंगलात की लाइफ हमें मेंटेन रखनी चाहिए, मैमल्स, एनिमल्स, बर्ड, ह्यूमन लाइफ सबको हमें मेंटेन रखना है ताकि वो अपने हैबिटेट वाले माहौल में खुश रह सकें। नेक्स्ट सर। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तमाम नेमतों के बारे में सर पूछेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो दरख्त प्रोवाइड किए हैं, जो माहौलियात से हमें मुवाजना किया है, मैंने एक सूरत की जना आयत नंबर 99 सूरह नाम पारा नंबर 7 आयत नंबर 99 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, और देखो वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके जरिए से हर किस्म के नबातात को निकाला, फिर इससे हरी हरी शाखें निकाली जिससे हम तय दर तय चढ़े हुए दाने निकालते हैं, और इसी तरह खजूर के दरख्तों के शगुफों में से पहलों के गुच्छे पैदा किए जो बोझ के मारे झुके पड़ते हैं, और इसी तरह अंगूर, जैतून और अनार के बाग पैदा किए बाहम मुशाबा और गैर मुशाबा। इनके फलों को देखो जब वो फलते हैं, फैलते हैं, और उनके पकने को देखो कि पकने के बाद अपनी रंगत, खुशबू और मजे में कैसी अजीब नौयत पैदा करते हैं। इसी में कहा जाता है फबिय्यि आलाइ रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बेशक जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं उनके लिए इन सब चीजों में रबूबियत इलाही की बड़ी निशानियां छुपी हुई हैं। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर लाइव्स। उसके बाद है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइडल एनर्जी जनरेशन, मींस कि हमारी हाइडल एनर्जी जो है जनरेट किस तरह हो रही है। इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि मींस कि एक कंसेप्ट होता है डैम का।
कि एक्चुअली डैम होता क्या है, हम लोग क्यों डैम बनाते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अ डैम इज अ बैरियर that stops or restricts the flow of surface water or the underground stream। मीन्स कि एक जगह जहाँ पे हमारा पानी का फ्लो होता है उसकी जगह पे हम डैम बनाते हैं, उसको फिर स्टोर करते हैं, जो हमारा रिजर्वायर बन जाता है। फिर जो स्टोर किया पानी होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। ये देखें, ये हमारा पेन स्टॉक है, मीन्स कि ये हमारा कंट्रोल गेट है, यहाँ से हमारा पानी आता है, यहाँ पे हमारी एक टरबाइन होती है। और आप ये देखेंगे कि टरबाइन और जनरेटर की जो शाफ्ट है वो एक ही है, मीन्स कि बोथ आर कपल्ड टुगेदर। जो हमारा जनरेटर जो टरबाइन है वो इलेक्ट्रिक मीन्स कि ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, और जो जनरेटर है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर ये आगे पावर सप्लाई करेगा टू द ट्रांसफार्मर, और आगे इनकी लाइंस होती हैं जिसको बोलते हैं हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, या डायरेक्ट मीन्स के डिपेंड करता है कि हम उस इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। हाइड्रोलिक मीन्स के ये डेफिनेशन भी मैंने इसकी लिख दी। हाइड्रोलिक टर्बाइन converts the energy of flowing water into mechanical energy. A hydroelectric generator converts the mechanical energy into electricity. This is in turn causes the electricity to flow and the voltage to develop at the generator output terminals. उसके बाद है why hydropower। जी मीन्स कि सिर्फ हाइड्रो पावर ही क्यों? सर ये मीन्स के बीच में हमारे दोस्त हैं, उनको एडमिट कर रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। दोस्त भी तो चले आगे चले। ठीक हो गया। Why hydropower? It is the only form of energy that has been fully developed and not a much research is required to exploit। मीन्स के से ये बता रहे थे कि अबाउट 60,000 मेगावाट वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द हाइड्रो पावर। मीन्स कि हमारी पाकिस्तान की जिस तरह लोकेशन है जिसके लिहाज से हम लोग 60,000 मेगावाट बिजली जो है पैदा कर सकते हैं। बट इन द लास्ट 72 ईयर्स हम लोग सिर्फ उसमें से 15% ही सिर्फ यूटिलाइज कर सके हैं। बाकी जो 85 है वो हम लोगों ने अभी तक यूटिलाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक हंडल्स हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हम लोग हाइड्रोपॉलिटिक्स भी बोलते हैं। वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि हाइड्रोपॉलिटिक्स क्या होती है, हमारे यहाँ उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिकली रीजनली हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। Geography of Pakistan supports the hydropower, जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया। This flow can be generated through dams built on rivers, barrages, etc. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक लिस्ट ऑफ फेमस डैम्स आर पाकिस्तान। मींस के अप्रोक्सीमेटली टोटल देयर आर 150 डैम्स इन पाकिस्तान। टोटल जो डैम की कैपेसिटी है, मींस के हमारे जो काउंटिंग में कहें तो 150 डैम्स है हमारे पाकिस्तान में। उसमें से जो फेमस डैम्स हैं उनका मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल एक हमारा तरबेला डैम है, और इनके आगे मैंने इनका पावर आउटपुट लिखा है कि मींस के 4888 मेगावाट तरबेला डैम इज प्रोड्यूसिंग दिस मच वाट पावर। उसके बाद मंगला हो गया, वर्साक हो गया, मीरानी डैम हो गया 117 मेगावाट, खानपुर 200 मेगावाट, सतपारा 17.36 मेगावाट, गोमल सैम डैम, हब रिवर हो गया जिसकी कैपेसिटी है 5 मेगावाट, डायमर बादशाह डैम 4500 मेगावाट, गुलपर हाइड्रो पावर वर्किंग में तो नहीं है? हाइड्रो प्लांट नहीं सर, अभी वर्किंग में नहीं है सर, मगर मैंने सर ये नेट से निकाला था। मीन्स कि इनकी जो कैपेसिटी है उनके लिहाज से मैं डिस्कस कर रहा हूँ सर। ठीक है। उसके बाद कालाबाग डैम है जिसकी कैपेसिटी है 300। सर इशू तो है ना, इसलिए इफ जी सर इफ कंस्ट्रक्टेड मींस कि उनकी जो रिजर्वेशन से मैंने आगे आप देखें ना लिखा हुआ है इफ कंस्ट्रक्टेड दैट इफ कंस्ट्रक्टेड 3600 मेगावाट विल बी प्रोड्यूस पावर। उसके बाद नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी है 969 मेगावाट। उसके बाद ये मैंने उनकी लोकेशन लिखी है। फॉर एग्जांपल हमारा तरबेला डैम है कहाँ पे है? हरीपुर में है, इंडस रिवर पे ये लगा। उसकी क्या इसके लेंथ कितनी है? 143.6 ये मैंने फीट में दिया। ये 1974 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। ये 1962 हो गया। ये मीन्स के सारे जो हैं इनकी मैंने आगे डायमर बादशाह डैम की सर मुझे नहीं मिली कि वो किस ईयर में बना था,
मैंने कोशिश की मगर मुझे उसकी डेटा नहीं मिली कि किस यहाँ ईयर में काफी टाइम तो भी कंप्लीट हुआ बनेगा, था और इसकी बनेगा अभी कमीशनिंग कब स्टार्ट। हाँ सर अंदर, ये जी सर बनेगा, जी। फ्यूचर में बना था नहीं, ये उसके बाद बनेगा। जी सर बिल्कुल। उसके बाद है मंगला डैम है, खानपुर डैम है, हब है। ये मैंने 1979 हब डैम मलीर में बना था, जिसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी, कमिश्निंग में आया था 1979 में। ठीक हो गया, ये रिमेनिंग है। मीरानी डैम हो गया। उसके बाद है मेरिट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, मींस के इनकी खुसूसियात क्या हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। पहला हो गया रिन्यूएबल सोर्स है, उसके बाद हो गया फ्यूल सेवर है, फ्लेक्सिबल टू मीट लोड, इफिशिएंट है, रिलायबल है, लो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ये मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा। ये मेरी एंड की एक स्लाइड है जिसको मैंने डिस्कस किया है, लो ऑपरेशन अच्छा एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। सिकंदर, ये उसके तो बाद हो गया सबको पता प्रूवन है टेक्नोलॉजी। सिकंदर मेरिट्स ऑफ हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जनरल तो सबको पता है, जितने भी सारे ऑनलाइन होंगे इस वक्त स्टूडेंट्स, सबको पता है जी इसका सर। क्या फायदा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका पर्टिकुलर फायदा पाकिस्तान को क्या है, उसको क्या डिस्कस किया आपने? सर उसको मैंने किया है, पाकिस्तान का हाइडल पावर जनरेशन कैपेसिटी, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, आउट ऑफ 60,000। सर जिस तरह आप पूछ रहे हैं उसको मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे क्या हर्डल्स हैं जिसकी वजह से हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं पाकिस्तान में इतना इसके क्यों कमी आ रही है, या फ्यूचर में जो हमारी इसकी कंट्रीब्यूशन होगी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है ईयरली, उनका भी मैंने डिस्कस किया है। वो मैंने कुछ चार्ट्स वगैरह बनाए हैं जिसकी बेसिस पे मैं आपको डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा, और होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। Out of 60,000, only 9,387 megawatt has been developed by WAPDA in 72 years due to bureaucratic address. Only 15% has been developed, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया। ये है currently there is a 28% of hydel energy contribution in the Pakistan's total energy mix। ठीक हो गया। उसके बाद है इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान। इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान, ये एक मैंने उनकी वेबसाइट से निकाला है जिसमें हमारा ग्राफ शो कर रहा है मंथली जनरेशन मिक्स फ्रॉम 2019 टू 24। ये देखें, ये हमारा हो गया हाइड्रो, हो गया ये हमारा हाइड्रो। ये देखें इसकी कैपेसिटी जुलाई हेलो हेलो अंदर का नेट का इशू उनके है सर। नेट का इशू। सिकंदर का मसला। सिकंदर नेट हैज बीन ऑन। सिकंदर आवाज आ रही है आपको मेरी? सिकंदर चला गया। हेलो सिकंदर की आवाज नहीं आ रही मुझे। सर वो डिस्कनेक्ट हो गए और होस्ट आप ही आ गए दोबारा से। डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा मैं होस्ट आ गया, अब क्या करें? किसी और को बना दूं? ये तो थे भी अकेले। अच्छा दूसरा ग्रुप किसका था और किसका ग्रुप था? यासन? जी सर और हमारा किसका भी। ग्रुप? इशरा को सर होस्ट बना दें। ये अयूब लेकिन साहब का सर अभी आप न्यू सेशन स्टार्ट कर ले क्योंकि इसमें तो टाइम कम रह गया। कितना टाइम रह गया बाकी? अभी है 15 मिनट है। सर अभी तो कोई ये अयूब से जरा 15 मिनट पूछिए। है। 15 अयूब, मिनट। मोहम्मद अयूब, मोहम्मद अयूब आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही होगी सर। अयूब आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो, ये जरा आप अयूब को कन्वे कर दीजिएगा, एहसन या कोई और जी जो सर। भी। अयूब आवाज आ रही है आपको मेरी?
जी सर, आवाज आ रही है अभी आपकी। अयूब, आपके साथ हर दफा एक ही प्रॉब्लम होता है कि आप बार बार डिस्कनेक्ट होते हैं और फिर कनेक्टिंग के लिए बस ये डिस्कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट। आपके साथ मुस्तकिल ये प्रॉब्लम है, वजह क्या है सर इसकी? आवाज आ रही है आपकी, पर थोड़ी कट के आ रही है असल में। कट के तो आएगी, आप क्योंकि प्रॉपर क्लास नहीं लेते। आप कहाँ होते हैं जब मेरी क्लास होती है? सर मैं यही था, ज्वाइन करने की ट्राई कर रहा था, मैंने हर स्क्रीनशॉट दफा भी हर भेजे दफा थे शान को, देखें, पर हर ज्वाइन दफा आप नहीं हो रही थी क्लास मेरी अभी। बात सुनिए। आपके साथ हर दफा एक ही प्रॉब्लम है कि आप कनेक्शन मसला होता है और बार बार आप रिक्वेस्ट भेजते हैं जिससे क्लास डिस्टर्ब होती है। नहीं सर, हर दफा नहीं होती सर, इस दफा हर हुई दफा है। होती है, मैंने आपको हर दफा देखा है। आप हर दफा आपका लिंक ड्रॉप होता है, आप फिर रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर ऐड होते हैं, फिर आपका ड्रॉप हो जाता है। आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, या आप कहीं फील्ड से बहुत दूर होते हैं, या घर से बाहर होते हैं? रीजन क्या है इसकी? ये बाकी असल में सर मैं फील्ड पे हूँ, पर इस तरह होता है, काफी दफा डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो मैं आप आउटसाइड परचेज पे करें। हूँ आप सर, अगर मैं फील्ड पे फील्ड हैं, साइड पे हूँ मैं। सुने, आप साइट पे हैं तो उसके सॉफ्टवेयर के पैकेजेस आए हुए हैं, आप उस स्ट्रॉन्ग पैकेज को आप परचेज करें ताकि आपकी क्लास तो सही हो। नहीं तो आप फिर आप कनेक्ट ही ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम होती है मैं बार बार। नहीं नहीं सर, मैंने पैकेजेस किए हुए हैं मोबाइल के ऊपर, नेटवर्क सही होता है। पर तो बार आज बार थोड़ा डिस्कनेक्ट मसला क्यों कर होता रहा है? है, वैसे सही होता है सर, इतना प्रॉब्लम नहीं करता। तो हम आपको एक दफा ऐड करेंगे, देन नेक्स्ट टाइम जो है ना, हम ये आज मैं थोड़ा आप प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि हवा सुने मेरी ज्यादा है, बात। सी साइड पे सुने, हैं हम, थोड़ा समंदर के अब किनारे मेरी पे हैं, बात थोड़ा सुन लें फील्ड, आप, पहले मेरी इस बात वजह सुन से लें। सर। मेरी बात सुन हवा लें बहुत आप। ज्यादा है आज। हवा बहुत ज्यादा है, चाहे जो कुछ हो। नेक्स्ट टाइम जो है, अगर आपकी एक दफा में डिस्कनेक्ट हुआ, मैं नेक्स्ट टाइम आपको ऐड नहीं करूंगा। ठीक है? आप किसको बनाना है? हाँ सर, मुझे बनाना है। आई एम सॉरी सर, वो मेरा लाइट चली गई थी तो इस वजह से नेटवर्क कनेक्शन चला चलें, गया। कोई अभी मसला मैंने नहीं। हॉटस्पॉट ऑन किया अपने लैपटॉप से। हवा बहुत ज्यादा है और फलाना बहुत ज्यादा है। स्टार्ट करें। जी। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, ठीक हो गया। उसके बाद है काजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन पाकिस्तान। मीन्स के पाकिस्तान में पानी की कमी क्यों है, किस वजह से है, उनको मैंने कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया है। पहला पॉइंट है हाइड्रोपॉलिटिक्स एट रीजनल एंड डोमेस्टिक लेवल। वेस्टेड इंटरेस्ट मीन्स के जाती वाटर रिजर्वायर्स मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाइडल फैसिलिटीज। मीन्स के जो हमारी हाइडल फैसिलिटीज हैं एग्जिस्टिंग, हम उनको मेंटेनेंस प्रॉपर वे से नहीं हो रही, जिनकी वजह से होती है। एक चीज और भी मैंने इसमें लिखी है, एनुअली थ्रोइंग 29 MF मीन्स के मिलियन एकड़ फीट water into the sea due to shortage of storage capacity. The economic benefit of this wasted water is more than 4,500 billion. तो इसके मीन्स के इसको हमें थोड़ा गौर फिक्र करना चाहिए कि हमारा जो इतना ज्यादा पानी, तकरीबन 60% जो है हमारा समंदर में जा रहा है। दो के समंदर में भी जाना चाहिए। मीन्स कि उसकी जो लहरें होती है उसमें अगर फ्रेश वाटर नहीं आएगा तो हमारा समंदर आगे आ जाएगा। उसकी भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, मगर इस पे हमें फोकस करना चाहिए, जिन पे ऑलरेडी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। और ऑलरेडी कुछ जो डैम्स हैं हम लोग ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से इंशाल्लाह ये चीज़ कवर हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज हो गया, ये भी उससे कंटिन्यू है। वाटर थेफ्ट हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, लेक अवेयरनेस अमंग मासेस, ओवर पॉपुलेशन, आउटडेटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसको मीन्स कि मैं अगर डिस्कस करूं कि हमारे यहाँ इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि पानी की क्या अहमियत है। हम लोग कोई पानी यूज कर रहे होते हैं, या मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग घरों में पानी यूज कर रहे हैं, टंकी खुली होती है, मीन्स कि उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, हमें अहमियत का ही पता नहीं है कि ये पानी हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री के मुताबिक ये हमें कहा जा रहा है कि जो हमारी थर्ड वर्ल्ड वार होगी वो पानी पे होगी। इन चीज़ों को हमें इसके समझना चाहिए। बंदों इसके पीपल्स में अवेयरनेस आनी चाहिए कि हमारा पानी जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कंट्रोल मेजर्स टू मिटिगेट द वाटर स्कैरसिटी इन पाकिस्तान। मीन्स के ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं इसको हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पानी की जो मीन्स की वाटर स्कैरसिटी है पाकिस्तान में कम हो जाए। ऑल प्रोविंस, उससे पहला ये है कि ऑल प्रोविंस शुड
sit together to resolve the water issues। मीन्स कि हमारे सारे प्रोविंस के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वो साथ बैठ के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर। ठीक हो गया। मीन्स जिस जिसका प्रॉब्लम है सबको मिला के एक जगह बिठा के, उससे पहले ये है कि हम लोगों में यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी होगी तभी हम आगे चीजें बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगी। उसके बाद है इंडिया इंटरनेशनल कोर्स। मीन्स कि इंडिया जो हमारे पानी के साथ प्रॉब्लम्स कर रहा है, जैसे 2017 में मोदी ने कहा था कि हम लोग आपके लिए पाकिस्तान का जो पानी बंद कर देंगे। दो के हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी जिसमें साइन होती है कि 3 दरिया जो है पाकिस्तान को जाएंगे, 3 दरिया जो है इंडिया को जाएंगे, तो आप उन पे वर्किंग करो ना। आप हमारे 3 दरिया के साथ क्यों खेल रहे हो? उसके बाद क्वेश्चन हो गई, जिनकी मैं आगे आपको पिक्चर दिखाऊंगा। वाटर फ्रेंडली इंटेंसिव क्रॉप्स होने चाहिए, स्प्रिंकलिंग सिस्टम होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज होनी चाहिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। ये देखें, ये हमारा ड्रिप इरिगेशन है जिसमें हमारा पानी सेव होता है। अगर हम गांव में जाएं तो आप देखेंगे जो छोटे छोटे मीन्स के रिवर बने हुए हैं जिनमें पानी का बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा है, जिसकी इंपॉर्टेंस किसी को है ही नहीं। ना गवर्नमेंट विजिट कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट हो उनमें विजिट नहीं कर रही, उनको प्रॉपर वे से देख नहीं रही कि हमारे यहाँ कितना पानी का लॉस हो रहा है। अगर उनकी हम साइड जो है वो फिक्स कर देंगे या उनमें कंक्रीट से कर देंगे तो हमारा पानी जो है काफी हद तक बच जाएगा। हाइड्रोपॉलिटिक्स, हाइड्रोपॉलिटिक्स क्या होती है? वाटर रिलेटेड पॉलिटिक्स इज नॉन एज हाइड्रोपॉलिटिक्स। उससे क्या होता है? हाइड्रोपॉलिटिक्स इन पाकिस्तान हैज द 2 dimensions, one is domestic politics, second is regional politics। it is usually stated that the conflict in future would be fought on the water issues। जैसे मैंने आप सबसे डिस्कस किया कि मीन्स के हमारी जो तीसरी जो वर्ल्ड वार होगी वो हमारी पानी पे होगी, पानी की वजह से होगी। हमें ये चाहिए कि पानी की इम्पोर्टेंस बढ़ाएं, उनको समझें कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये ईच पर्सन की ये जिम्मेदारी है कि उसको सेव करे जितना हो सके। और मीन्स कि ये ऐसी नॉलेज है जो हम आगे भी डिलीवर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में जो हमारा सर्किल है उनको हम प्रॉपर वे से समझाएं। जो लोगों फॉर एग्जांपल जैसे गांव में लोग हैं उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता, या वो सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं है तो उनको इनकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता। जैसे पानी है, किसी फसल को जा रहा है तो वो कंटिन्यू पूरी की पूरी रात चल रहा होता है, मीन्स कि ये हमारे लॉसेस हो रहे हैं पानी की वजह से। तो इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। The smaller province are those, means के domestically there are always been a problem regarding the water distribution among provinces। The smaller provinces कौन कौन से आ रहे हैं? जैसे हमारा सिंध हो गया, बलोचिस्तान हो गया, always complain they aren't getting their due share of water। Sindh accuses Punjab and Balochistan accuses Sindh for using their share of water। We have water related problems with the regional countries such as India and Afghanistan। जैसे हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, अफगानिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम है। जैसे अफगानिस्तान से एक हमारा रिवर आ रहा है जिसका नाम है काबुल रिवर, उसके साथ भी हमें मीन्स के काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। फ्रॉम a water abundant country at the time of independence, Pakistan has become a water scarcity। मीन्स के जैसे हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उस टाइम से हमारे यहाँ जो पानी की प्रॉब्लम हो रही है उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह वो मिनिमाइज हो रहा है। रैंकिंग 3rd amongst the water scarce countries in the world। ये कहाँ से In डाटा लिया आपने? 1947 पाकिस्तान रैंकिंग possessed 5। सिकंदर, सर ये नेट से लिया, रैंकिंग 3rd नेट से लिया अमंगस्ट, था। जी सर, जी तीसरे नंबर पे आता है। जी सर जी। एक सर ये मेरे पास एक दोस्त के सर CSS के नोट से, तो मैंने वहां से सर ये डेटा लिया है पूरा सर ये वाला। ठीक है, आगे। In 1947 Pakistan possessed 5,600 cubic meters of water per person, which reduced to 5,260 cubic meter in 1951। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा कम हो रहा है, 1200 cubic meter हो गया, 1100 cubic meter हो गया, 1000 cubic meter हो गया। At the end which went to 908 cubic meter per head in 2017। It was projected Sir Muhammad Ayub is entering to waiting room। नहीं लेना, I have joined, admit नहीं him। नहीं लेना उनको। सर अभी तो मैंने कर दिया उनको एडमिट, नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं केयर करूंगा। ठीक है सर, ठीक है। एट द एंड जो हमारा एक लास्ट पॉइंट है, इट वाज प्रोजेक्टेड टू टच डाउन 800 cubic meters by
2025 if new water reservoirs were not constructed in the country. मीन्स इससे मुराद ये है कि मीन्स के मैंने नेट पे सर्च किया था कि पर पर्सन जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ईच पर्सन जो पानी की रिक्वायरमेंट है 172 गैलन पर डे। ठीक हो गया जी। Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of presentation is clean development mechanism. Now, first of all, we will cover that what is clean development mechanism. The objective of the United Nations Framework Convention on Climate Change, which is also called as UNFCCC, entered into force in March 1994, is to stabilize greenhouse gases concentration in the atmosphere at levels such would prevent dangerous human interference with the climate change. To achieve this objective, all countries accept a general commitment to address climate change and adapt to its effects. The convention requires Annexure 1 countries to take lead in reducing their greenhouse gases. The greenhouse gases basically are coming from the burning of fossil fuels. When we are going to burn the fossil fuels like oil, like gas, like petrol, then the greenhouse gas is coming. The Kyoto Protocol sets a legal binding on Annex 1 countries to reduce their greenhouse gases. And now we will discuss, there are two categories. One is called developed countries and other is called developing countries. There are 6 greenhouse gases that are covered by the Kyoto Protocol. Number 1 is called carbon dioxide. Number 2, methane. Number 3, nitrous oxide. Number 4, hydrofluorocarbons. Number 5, perfluorocarbons. Number 6, sulfur hexafluoride. And these all 6 are coming under the category of greenhouse gases. CDM. Now we will discuss in detail about the CDM. The CDM, defined in Article 12 of the protocol, allows a country within an emission reduction or emission limitation commitment under the Kyoto Protocol to implement an emission reduction project in developing countries like Pakistan and other some countries are coming under the category of developing countries, not fully developed, like some European countries. Asian countries are called developed countries. They are already fully developed. The clean development mechanism is one among the 3 flexible protocol mechanism facilitated implementation of greenhouse gases emissions reductions in developing countries. Now we will discuss about the objective of CDM. The objective of CDM is the clean development mechanism was designed to meet the dual objective to help developed countries fulfill their commitment to reduce emissions and to assist developing countries in achieving their sustainable development. Sustainable development means anything which is long lasting. How has CDM role been? Till now, how much CDM plays a major role. We will discuss now. Along with the China and Brazil, India is a leader in CDM. Since its inception in 2007, a number of small and medium projects in the field of energy efficiency and renewable energy were set up in India in the last 2 decades. There are some different stages of CDM. Number 1, there is called verification and certification. Number 2, project identification and formulation. Number 3, monitoring. Number 4, national approval. And at the last but not the least is called registration. Steps for implementing CDM project. Number 1, there are certain projects that need to be followed for CDM project. Number 1 is called project identification. The project identification means the project of scope. Project scope. This is the first step, and here the research is done to identify the idea which has potential to reduce their emission of greenhouse gases. Number 2 is called government endorsement. After the identification of the idea, it is presented
before the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to be endorsed by the government of Pakistan. Number 3, project development. Number 4, that is called validation. Number 6, registration. A formal acceptance by the executive body make the identified project a CDM project, giving it all the legal benefits and financial supports as per the provision of Kyoto Protocol. Now this is called CDM cycle, clean development mechanism. It will start from the project design and formulation. After that, national approval, then it would come to the validation or registration. Number 4, then it would come to the project financing, which investors are being used or covered this project financing. Number 5, monitoring. Then the project will be monitored by the project participants. And number 6, verification or certification. And these both are coming under the category of monitoring report, operational utility. After that, the issuance will be given. Implementation of CDM in Pakistan. CDM project at Pak Arab is the first of its kind in Pakistan. Global warming has become the most important challenge the world is facing in the 21st century. A lot of research and development is being done for curtailing greenhouse gas emissions. Following accession to the Kyoto Protocol of the United Nations Framework Convention on Climate Change. In January 2005, Pakistan made the Ministry of Environment the designated National Authority DNA for CDM under the protocol. A CDM cell was created in the ministry in August 2005. In Pakistan, the first CDM project in Pakistan was approved in April 2006 at Pak Arab Fertilizer Limited, Multan, with a total cost of USD $15 million. The project Corporation of Japan abates 1.5 million tons of carbon dioxide equivalent per annum. It generates adequate revenue from the sales of CER, certified emissions. After registration with the CDM Executive Board, the project became operational in January 2007. The basic aim of this project is the abatement of NO2 and NOx emissions from the stack gases of HNO3 plant. CDM at cogeneration plant. Status of registration of alternative and renewable energy projects with CDM, like RE called ARE. ARE means alternative renewable energy. There are two types of energies which are available, or we can say there are two types of energies. One is called conventional, and other is called non-conventional. And ARE is coming under the category of non-conventional. CDM is one of the instruments that developers of the alternate and renewable energy projects pursue and earn financial returns by getting their projects registered with CDM Executive Board and selling the acquired certified emission reduction certificates in the international carbon market. There are many alternative projects in Pakistan are being going on in different locations. We will discuss that locations after that slide will come. Current market price of 1 CER is below USD1. However, it is expected to increase as the developed countries are going to reaffirm their commitment to take target to reduce emissions in COP21 to be held in Paris in October 2015. These are some kinds of projects which are being going on in Pakistan, like wind energy, biomass, small hydro, solar project registered with the CDM. Wind energy, biomass, small with the different efficiencies and with the different CERs. Wind power, solar power, these all are coming under the category of renewable energies. Wind power till to the date, 18 wind power projects are in advanced stage of CDM registration process. 8 projects of 50 megawatt each have been registered with the CDM Executive Board. Aggregative number of approved CER from these projects is 709,287. Solar power, number 2 is called solar power.
Number 3, small, mini, micro hydro. Aga Khan Rural Support Program got registered their CDM project for community-based renewable energy development in the northern areas in the Chitral, Pakistan 103 micro hydro turbine site with the 15 megawatt capacity. Fourth number is biomass, or we may call it as a waste to energy. Now we will discuss regarding the checklist of investors to initiate developing clean energy projects. CDM screening methodology for ARE, alternative renewable energy project developers. Step number 1, clarification of scale of the project activity. Step number 2, clarification of design of project activity. Step number 3, selection of UNFCCC methodology. Number 4, assessment of CERS potential. Number 5, clarification of crediting projects. Number 6, clarification of potential for recovery of transaction cost. Number 7, sustainability check. Number 8, additionality check. Number 9, management decision to go ahead or not. Number 10, if management decides for go ahead, then issue prior consideration note to climate change division and onward communication to CDM executive board. Thank you so much. Thank you so much for listening. And we will continue our next section very soon. Thank you.